Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Notes, Changing the Way of Learning। स्वागत है आप सबका। अब हम बात करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट 11 लेके। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर जो आपका अपकमिंग टेक्निकल जॉब एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी मैचिंग करना है। देखो नंबर ए, स्मॉल लेटर ए, भाखरा डैम वाज कंस्ट्रक्टेड विथ पाजोलाना सीमेंट। यहाँ पे सी मतलब ए का साथ सी का मैचिंग होगा। सी पाजोलाना सीमेंट। नंबर बी, द सीमेंट यूज फॉर केमिकल प्लांट इज, केमिकल प्लांट पे जो सीमेंट यूज होता इट इज हाई एल्यूमिना सीमेंट। करेक्ट आंसर डी। बी का साथ डी का मैचिंग होगा। डी। दी सीमेंट नॉट बी यूज्ड इन थिन RCC स्ट्रक्चर इज। करेक्ट आंसर ए। सी का साथ ए। डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर स्टेटमेंट, द सीमेंट यूज्ड फॉर मेरीन वर्क्स इज। करेक्ट आंसर बी, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ये वाला होगा बी। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस्ट। करेक्ट आंसर ये। 83 नंबर क्वेश्चन, द हार्डनिंग इज द फेनोमेनन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच। Correct answer C. The cement paste sets and develops strength. Cement paste sets and develops strength. Correct answer C. 84. The phenomenon by virtue of which the cement does not undergo large change in volume when treated with water is known as soundness. Correct answer B. 85. The fineness of cement is measured in terms of, यहाँ पे ए एंड ए और बी दोनों ही आंसर होगा। नंबर ए, परसेंटेज वेट रिटेन्ड ऑन IS सिप नंबर 9, सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेमी पर ग्राम ऑन द सीमेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी, आइदर ए और बी। (86) नंबर, टू मच फाइनेस ऑफ सीमेंट बोथ ए एंड बी आंसर होगा। रिजल्ट क्रैक्स इन कंक्रीट जनरेट्स ग्रेटर हीट। ए एंड बी दोनों आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज द गवर्निंग फैक्टर फॉर।
mixing of concrete, compaction of concrete, placing of concrete। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। 88 number questions, according to IS 269 1976, the requirement of an ordinary Portland cement is that the residue does not exceed 10% when sieved through IS sieve number 9. Its expansion is not more than 10% when sieved through IS B number, its expansion is not more than 10 mm for unaerated cement. Number C, its initial setting time is not less than 30 minutes। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दी अबोव। ए बी सी तीनों ऑप्शन ही आंसर होगा। 89 द compressive strength of an ordinary Portland cement 1:3 cement mortar cube after 7 days test should not be less than 17.5 Newton per mm square। Correct answer B। 90 number question, VCATS apparatus is used to perform consistency test। 91 number question, the knowledge of a standard consistency of a cement paste is essentially to perform 20 mm। setting time टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी। इन VCATS apparatus the diameter of VCAT plunger is 10 mm। 93 number question, the length of VCAT plunger in VCATS apparatus varies from 40 to 50 mm। 40 to 50 mm। 40 to 50 mm। 94 number question, the percentage of water for making a cement paste of normal consistency varies from 25 to 35%। 95 number questions, to perform the initial setting time test, the water is added to the cement at the rate of 0.85 p by weight of cement। Correct answer C। 96 number question, Lee Chatelier apparatus is used to perform soundness test। 97 number, to perform the soundness test, the water is added to the cement
at the rate of 0.72 p by weight of cement, where p is the percentage of water required for normal consistency paste. This statement is correct. 98 number questions. To perform the compressive strength test of cement, water is added at the rate of P plus 3% of water. P plus 3% of water, where P is the percentage of water required for normal consistency paste. 199 number. Initial setting time of ordinary Portland cement is initial setting time 30 minutes. A very important question. 100 number question. For performing the compressive strength test of cement, the size of cube mold should be 7.06 semi. Side. Correct answer A. एक सौ एक number question. According to Indian standard specification, for the compressive strength test of cement, the cement and standard sand mortar in the rate of 1:3 is used. Ratio standard mortar sand mortar in the ratio of 1:3. एक सौ दो number question. The cubes of cement prepared for compressive strength test should be kept at a temperature of 27 degree plus minus 2 degree Celsius in an atmosphere of at least 90% relative humidity for 24 hours. 103 number question. During field test, the cement is said to be pure and of good quality when the color of cement is uniformly greenish gray. A handful of cement thrown into a bucket of water floats. Hand is thrusted into a bag of cement. It feels cool. यहाँ पे करेक्ट आंसर डी. ए बी सी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट. ए गुड क्वालिटी प्योर एंड गुड क्वालिटी सीमेंट. 104 number question. The inert mineral material used for the manufacture of mortars and concrete is aggregate. Correct answer C. 105 number question. According to IS 383 1970, a good aggregate for concrete construction should be chemically inert, sufficiently strong, sufficiently hard and durable. यहाँ पे करेक्ट आंसर डी. 106 नंबर क्वेश्चन देखो. For reinforced concrete, the aggregate used is sand,
ग्रेवल क्रस्ट रॉक्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी। 107 नंबर क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट ऑफ लो डेंसिटी द एग्रीगेट यूज्ड इज, फार्नेस, क्लिंकर, कोक ब्रिज, सॉडस्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी। The material having particle size varying from 0.002 to 0.06 mm is termed as silt. It is very important question. ये रेंज से लेस साइज होगा तो उसको क्ले कहा जाता है, क्ले। 109 नंबर क्वेश्चन, an aggregate is said to be fine aggregate when aggregate if its size is more than 75 mm. सॉरी, ये रॉन्ग, गलत बोला। सी, करेक्ट आंसर सी। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन 75 mm. 110 नंबर क्वेश्चन, द एग्रीगेट which pass through 75 mm IS sieve and entirely retain on 4.75 mm IS sieve is known as coarse aggregate. 111 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm. करेक्ट आंसर डी। 112 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी 4.75। 113 नंबर, द एग्रीगेट which pass through 4.75 mm 4.75 mm IS sieve and entirely retain on 75 micron IS sieve is called, यहाँ पे करेक्ट आंसर फाइन एग्रीगेट। 114 नंबर क्वेश्चन, दी मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी 4.75 mm. दी ए मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का मिनिमम पार्टिकल साइज 0.075, करेक्ट आंसर बी। दी एग्रीगेट ऑफ 116 नंबर क्वेश्चन, दी एग्रीगेट ऑफ राउंडेड शेप हैव मिनिमम वॉइड, 117 नंबर क्वेश्चन, दी एग्रीगेट ऑफ एंगुलर शेप हैव मैक्सिमम वॉइड। 118 नंबर क्वेश्चन, दी साइज ऑफ एन एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय लेंथ गॉज, नो, इट इज रॉन्ग। 119 नंबर क्वेश्चन, दी एग्रीगेट ऑफ राउंडेड शेप required minimum cement paste to make good concrete. It is correct. This statement is true. 120 number question. Which of the following statement is correct? उनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट, उसको जांच करो।
देखो, दी मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड 1/4 of the minimum dimension of the plain concrete member. It is correct statement. The maximum size of coarse aggregate should not exceed 1/5 of the minimum dimension of the reinforced concrete. It is correct. A भी correct, B भी correct. The aggregate of 40 mm, 20 mm and 10 mm size are commonly used for concrete works. It is correct. यहाँ पे correct answer D. So guys, it is much for today. अगर आप हमारा चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।